नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और मैं हूं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। नीति शतक वाचन क्रम में आज भाग 4 लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए 75 श्लोक से आगे 100 श्लोक तक देखते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप सभी भी नीति शतक का वाचन करिए। शुरू करते हैं। क्षीरेणात्मगतोदय गतोदकाय हि गुडा दत्ता पुरा खे किलः क्षीरोत्तापमवेक्षतेन पयसा स्वात्मा कृशानहुतः गन्तुं पावकमुन्मतस्तदभवद् दृष्ट्वा तु मेत्रापदम् युक्तं तेन जलेन शाम्यति शतां मैत्री पुनस्त्विदृशी इतः श्वपिति केशवकुलमितस्तदीयद्विषा मितश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाशेरते इतोऽपि बडवानलशः समस्तसंवर्तकै अहोरवितमुर्जितवर्षहं च सिन्धोर्वपुः तृष्णां छिन्धि भजक्षमा जहि पदं पापेरतीं मा कृथा सत्यं ब्रूहि नुयाहि साधु पदवीं सेवा स्वसा विद्वज्जना मन्यान्मानय विद्विषोऽप्यनुनयः प्रख्यापय स्वान्गुणान् कीर्तिपालय दुःखिते कुरु दया मे तत्सतां लक्षणम् मनसि वचसि काये पूर्णपीयूषपूर्णा स्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीडयन्तः परगुणपरमाणुर्पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः किं तेन हेमगिरिडां रजताद्रिणीवा यन्नाश्रिताश्च तरवस्तरवस्तेव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कल्लोलनिम्बकुटजायपि चन्दनस्यु रत्नैर्महाहैस्तुतुषुर्नो देवा न भेजिरे भीमविषेडभीतिं क्षुधां विना प्रययुर्विराम न निश्चितार्थाद्विरमन्ति धीरा क्वचिद् भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कनशयन् क्वचिद् शाकाहार क्वचिदपि च शल्योदनरुचि क्वचिन् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरौ मनस्वी कायार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम् ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम् ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजिता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम् निन्दतु नीतिनिपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशतु गच्छति वा यथेष्टम् आद्यैवा मरणमस्तु युगान्तरे वा नय्यातपथ्य प्रविचलन्ति पदं न धीरा
भग्ननाशस्य करण्डपिण्डितल्लोलनेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुरविवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्ते पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा लोका पश्यत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम् आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु नास्त्युद्यतशमो बन्धुर्कृत्वा नावसिद्धति छिन्नोऽपि रोहति तरुक्षीणेऽपि उच्यते पुनश्चन्द्रः इति विमृशन्तः सन्तः सन्तमप्यन्ते न दुःखेषु नेता यस्य बृहस्पतिप्रहरणं वज्रं सुरा सैनिकाः स्वर्गे दुर्गमनुग्रह खलु हरैरैवरावतो वारणा हित्वैश्वर्यबलान्वितोऽपि बलाद् विद्भग्नपरैः सङ्गरे तद्युक्तं ननु दैवमेव शरणं धिग्धवृथा पौरुषम् कर्मायत्तं फलं पुंसा बुद्धिकर्मानुसारिणीं तथैव शुधिया भाव्यं सुविचार्यैव कुर्वताम् खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः सन्ताडितो मस्तके वाञ्छनदेशमनातपं विधिवशान् तालस्य मूलङ्गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पततां भगरं सदा सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भोग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यः पदा रविनिशाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयोरपि वन्दनं मतिमतां च विलोक्य दारिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मति रविनिशाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयोरपि वन्दनं मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मति सही गगन बिहारी कलमशध्वंसकारी दशशतकधारी ज्योतिषामध्यचारी विधिरपि विधियोगाद्ग्रस्य राहुडासौ लिखितमपि ललाटे प्रोजकन्तुकः समर्थः सृजति तावदशेषगुणाकरं पुरुषरत्नमलङ्करणं भुवा तदपि तत्क्षणभङ्गि करोति चेदहः कष्टं पण्डितता विधे पुरुषरत्नमहिभूषणैः सर्वागुणोकरकिह्न वैलागतमुहिमन्दविधि क्षणभङ्गुरतनदीन्ह पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किं नो लोकोऽप्यलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणं धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं यत् पूर्वविधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितं कः क्षमः नमस्यो नमस्यामो देवान् नुहत विधिस्तेऽपि वशगा विधिर्वन्दाशोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः फलं कर्म यतं यदि किममरैकिञ्च विधिना नमस्तकर्मेभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति
ब्रह्मायेन नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तौ महासङ्कटे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः शुभ्रो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ब्रह्मायेन कुलान्वनियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे विष्णुयेन दशावतारगहने क्षिप्तो महासङ्कटे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्रामति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे नैवाकृति फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सञ्चितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महाडवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तविषं स्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि या साधुश्च खलान् करोति विदुषौ मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहलं तच्छडात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छति हे साधो व्यसनैर्गुणै विपुले स्वास्थामृथां मा कृथा गुणवद्धा कुर्वतां कार्यजातं परिणतिवधार्या यत्नतः पण्डितेन अतिरवशकृतानां कर्मणां विपत्तेर्भवते हृदयगाहि शल्यतुल्यो विपाकः अस्थाल्या वैदूर्यमय्या पचति तिलककणाश्चन्दनैरदननोघैः सौवर्णैरलाङ्गल्यग्रैर्विलखिति वसुधार्कमूलस्य हेतो कृत्वा कर्पूरखण्डानवृतिमिह कुरुते को द्रवाणां समन्तात् प्रापेम कर्मभूमिं न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभागयः स्थाल्यां वैदूर्यमपयपजनि नीलकणाश्चन्दनैरेन्दनोघै सौवर्णलाङ्गल्यग्रैः विलिखिते वसुधामर्कमूलस्य हेतो कृत्वा कर्पूरखण्डान् कुरुते को द्रवाणां समन्तात् प्रापेम कर्मभूमिं न चरति मनुजो यस्तपो मन्द्यभाग्यः मज्जत्वं वशि पातु मेरुशिखरं शत्रञ्जयत्वा वाहवे वाणिज्यं कृषिसेवने च सकला विद्याकला शिक्षताम् आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परं न भाव्यं भवतीह कर्मवशतो भाव्यवश्य न सह कुतः भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जनः स्वजनतामुपयाति तस्य कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णां यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य कुलाभौ गुणसङ्गमः किमसुखं प्राज्ञेतरैः सङ्गति का हानिः सम्यश्रुतिर्निपुणा का धर्मतत्त्वे रतिः
कः शूरौ विजितेन्द्रिया प्रियतमा कानुव्रता किं धनं विद्यां किं सुखं प्रवासगमनं राज्यं किमाज्ञाफलम् अप्रियवचन दरिद्रैः प्रियवचनाद्यशोदारपरितुष्टैः परपरिवादनिवृत्ति क्वचित् पण्डितां वसुधाम् कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्तेन शक्ते धैर्यगुणाप्रमाष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्वहेर्न अधशिखायाति कदाचिदेव कान्ताकटाक्षविशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपाशैः लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सधीरः एकेनापि हि सूरेण पादाक्रान्तं महीतलं क्रियते भास्करेणेव स्फारस्फुरिततेजसा वर्णिस्तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणात् मेरुस्वल्पशिलायते मृगपति सद्य कुरंगायते व्यालो माल्यगुणायते विसरसा पीयूषवर्षायते यस्यांगे अखिललोकवल्लभमतं तमशीलं समुन्मीलति लज्जागुडौघजननी जनमीः वश्वामान्त्यशुद्धहृदयान्मनुवर्तमानां तेजस्विना सुखमशून्नपि शान्त्यजन्ति सत्याव्रताभ्यससिनो न पुनः प्रतिज्ञाम् विदुषां वदनाद्ववाचः सहसा यान्ति नो वही याताश्चेन्न पराञ्चति द्विरदानं हृदयैव। इस प्रकार से नीति शतक वाचन क्रम में सामान्यतः श्लोक वाचन किस प्रकार से करें उसको हम लोगों ने 1 से 110 श्लोक तक 75-76 से लेके 110 श्लोक तक संपन्न किया। आगे हम सभी परिशिष्ट भाग को देखेंगे। सामान्यतया नीति शतक वाचन के क्रम में बिना छंदों का प्रयोग करके ही श्लोक को पढ़ा गया है। साधारण रूप से प्रयास यह है कि आप सभी श्लोकों से परिचित हों, इसको बार बार श्रवण करें और आगे जल्द ही प्रयास करके मैं सस्वर श्लोक वाचन करके वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं परिशिष्ट भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।